Hare Krishna, we are ready. We'll have some kirtan. Jevrahamadhoma Kunjabihari Jevrahamadhoma Balaman Grivaranari Gopinjanavallabha Grivaranari
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhire Nashta Prayasha Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Hare Krishna. Tamadeha Tantra Prashamaya Papmanam. Tamadeha Tantra Prashamaya Papmanam. Tamadeha Tantra Prashamaya Papmanam. Nidesha Bhajam Cha Vibho Vibhutaye. Nidesha Bhajam Cha Vibho Vibhutaye. Yathavatara Tava Shukaradaya. Yathavatarastav Sukaradaya.
यथावतारस्तव शूकरादयः तथायमपि आत्मपथोपलभ्यते तथायमपि आत्मपथोपलभ्यते तमदेह तंत्र प्रशमाय पापमनां निदेश भाजां च विभो विभूतये यथावतारास्तव शूकरादयः तथायमपि आत्मपथोपलभ्यते तथायमपि आत्मपथोपलभ्यये तमदेह तंत्र प्रशमाय पापमनां निदेश भाजां च विभो विभूतये यथावतारस्तव शूकरादयः तथायमपि आत्मपथोपलभ्यते तमदेह तंत्र प्रशमाय पापमनां निदेश भाजां च विभो विभूतये यथावतारास्तव शूकरादयः तथायमपि आत्मपथोपलब्धये You, Deha, this body, Tantraha, I've assumed, Prashamaya, for the diminution, Papmanam, of sinful activities, Nidesha Bhajam, of instructions in devotion, Cha and Vibho, O my Lord, Vibhutaye, for the expansion, Yatha as Avataraha, incarnations, Tava, your, Shukara Adadayaha, the board and other forms, Tatha, so I am this incarnation of Kapila, Api, surely, Atmapatha, the path of self-realization, Upalabdhaye, not to reveal. My dear Lord, you assume this body in order to diminish the sinful activities of the fallen and to enrich their knowledge and devotion and liberation. Since these sinful people are dependent on your direction by your own will,
you assume incarnation as both and as other form. Similarly, you appeared in order to distribute the transcendental knowledge to your dependent. My dear Lord, you assume this body in order to diminish the sinful activities of the fallen and to enrich their knowledge in devotion and liberation. Since these sinful people are dependent on your direction for your own will, you assume incarnation as a bowl and as other forms. Similarly, you have appeared in order to distribute transcendental knowledge to your dependents. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. In the previous verses, the general transcendental qualifications of the Supreme Personality Godhead were described. Now the specific purpose of the Lord's appearance is also described. By his different energies, he bestows different kinds of bodies upon the living entities who are conditioned by their propensity to lord it over material nature. But in course of time, these living entities become so degraded that they need enlightenment. It is stated in Bhagavad Gita that whenever there are discrepancies in the discharge of real purpose of this material existence, the Lord appears as an incarnation. The Lord's form as Kapila directs the fallen souls and enriches them with knowledge and devotion so that they may go back to Godhead. There are many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, like those of the boar, the fish, the tortoise, and the half-man, half-lion. Lord Kapila Deva is also one of the incarnations of Godhead. It is accepted herein that Lord Kapila Deva appeared on the surface of the earth to give transcendental knowledge to the misguided conditioned souls. Hare Krishna Prabhuji. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisheshaya Shuddhavadi Pashata Deshatadine. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Amadeha Tantra Prashamaya Papmanam Nidesha Bhajam Cha Vivo Vibhutaye Yathavatara Tava Shukaradaya Tathayam Apiyata Pathopalabdhaye. My dear Lord, you assume this body in order to diminish the sinful activities of the fallen and to enrich their knowledge in devotion and liberation. Since these sinful people are dependent on your direction by your own will, you assume incarnation as the board and other forms. Similarly, you appeared in order to distribute transcendental knowledge to your dependents. Transcendental knowledge. Very interesting. Knowledge can be transcendental. Nothing transcendental is visible to us, actually. It is not in our capacity to discriminate between material and transcendental. I remember I used to teach in KMC College, Manipal.
I don't know if somebody of that is there now. And after the college is over, on Friday evening, we used to have very nice Sankirtan. 1 hour at a time. 1 hour Kirtan, then 1 hour class, then 1 hour Kirtan. Very nice, very pleasurable. And then sometimes what used to happen, because it was also the reading room, so students used to enter there by mistake. And when they look at us doing Kirtan, they'll be shocked. They'll not be able to appreciate the transcendental thing happening there. In modern society, there is no idea of transcendence. Unless we have mercy of a pure devotee, we have no access to anything transcendental. मैं पूरा जिंदगी दिल्ली में था, कभी वृंदावन नहीं गया, 23 साल कभी नहीं गया. क्यों? अगर गए भी तो कोई वैल्यू नहीं था. गुरु ही होता है जो धाम को रिवील करता है. धाम तो बहुत लोग चले जाते हैं, है ना, ट्रेन टिकट लेके तो कोई भी जा सकता है, लेकिन उसको फील नहीं कर सकते. सिमिलरली नाम जब तो सभी हर जगह ही, हर मोहल्ले में भजन मंडली होता है. ऐसा नहीं कि भारत में कीर्तन नहीं होता है. पर्टिकुलरली पहले तो लेडीज का तो ग्रुप होता ही था. एक ढोलक होगा और उनका कुछ चलता रहेगा, भजन मंडली. बट उसमें कुछ ट्रांसेंडेंटल है, हमको मालूम नहीं था. So the form of the Lord is transcendental, unka naam is transcendental, his dham is transcendental, his great devotees are also transcendental. First time I remember in college, which is the year 1987, we had a ISKCON class. And on the board, somebody with a chalk had sketched Prabhupada's face. हमारा कोई senior जो already ISKCON का follower था. And I could not actually feel the transcendental feature of that face. है ना? मैं ठीक है, कौन हो गई? And then we also claim we are transcendental, but we are fully material. Ulta. What is transcendental, we think to be material. And what is material, that is our consciousness, we think it is transcendental. We don't know what is transcendental now. So the most important thing which at this stage of our, हमारी जो अभी उसमें बहुत important है, to feel the naam is transcendental. Naam bina kuchu nahi chauda bhuvana loke. Bhaktivinoda Thakur says, except the name, there is nothing important in this material world. Particularly in Kali Yuga, this is the only way we can touch Krishna. We can realize Krishna. We can contact Krishna. We can feel the presence of Krishna. Whole day we are doing activities. If there is no proper touch with the Lord, then the activities will be done not in proper consciousness, not in proper faith and devotion. It will just be something we are doing. In fact, you will not get a quotation for that, but it's a general ISKCON saying, thumb rule, that 90% of a spiritual advancement depends upon your japa. It's reasonable also because it says, Hare Naam, Hare Naam, Hare Naam Eva Kevalam.
All other activities we do are also service to the Nama. The cleaning the temple of the Lord is also service to Nama. Sometimes it is so true, actually, we don't understand. Sometimes you're traveling. I think all we do is that we chant our round. That's all the service you can do. Correct? There is no you're traveling in the train. There's no deities to do aarti. है ना? Correct? प्रसाद भी शायद ना मिले. कुछ फल खा के जियोगे या. But one thing you do, chant the Nama. Correct? That's the most important part of our spiritual life. And it is by this vibration we can feel transcendental experience. The names are not material, they are transcendental. It's the first thing about Krishna you will perceive. Atha Shikashnamadi na bhave, nam adi. Now beginning with the name. Na bhavet grayam indriye. By the gross senses, you cannot ascertain the transcendent nature of the Lord. Just by that. Sevonmukhehi jivadau. Beginning with the tongue. When we chant the name of the Lord in a service spirit. Jivadau, namadau, athashikashanam adi. Beginning with the name. Jivadau, sevonmukha. The service starts with the tongue. Tara made jiva hoti, lo maya surumati. The most dangerous element we have is the tongue. सारे पाप कर्म इसी से होते हैं. दारू भी इसी से पीते हैं, मीट भी इसी से खाते हैं. इसको पकड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है. So Bhaktivinoda Thakur says, तारा मदे जीवा होती लोभो माया सुदुर्मति. Abba, this greedy tongue is there. ताके जिता कठिना संसारे. It's very difficult to win over this. Krishna bada doyama hai. Krishna is very merciful. So prasadana dilovai, to control this dangerous tongue, he has given his own prasada. अगर हमारे सारे इंद्रियों में किसी को पकड़ना है तो जीव को पकड़ो. पूरे दिन गप 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 गप. Prabhupada was once taking a class ले रहे थे. तो क्लास में ही लोग पीछे बैठे कुछ गप कर रहे थे. होता है आपस में. प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा है. So Prabhupada said, like frogs, they make sound. उससे होता है क्या, सांप पास आके खा जाता है उनको. So similarly, unnecessary talking, it only leads to offenses. It only leads to reducing our life. And then Kala Rupa comes. Snake comes in the form of Kala Sarpa and says, and it eats us. It doesn't help us. So this tongue has to be controlled. And what the tongue should do? Positive activity, constantly chant the name of the Lord. And then what is the other activity of the tongue? Dusra kaam kya hai jeev ka? To eat Krishna Prasada. If you make this principle, because Kirtanaya Sadahari, if you want to be tapasvi, there are so many tapasyas people do. But the greatest tapasya is to constantly chant the holy name of the Lord and constantly keep struggling to hear. If you can. Manavarava, Madhavakto, Madhyaji, Mam Namaskuru. Who cannot do this? Everybody can do it. Manavara means constantly chanting the name of the Lord. But it is not possible for you to chant the holy name of the Lord constantly. If you can do this, Krishna will personally maintain. But you cannot do that. Therefore, you have to do some Aruruksha, Aruda, Aruksha. Beginning and end. In the 6th chapter of Bhagavad Gita, it is said, in the beginning, material activities and cessation of material activities. There are 2 stages in spiritual life. Presently, we are using intensely all our senses. Therefore, in our stage of spiritual life that we are in, as much we can engage our senses in Krishna's service, that much good. But as we advance in spiritual life more and more,
Because what happens in the beginning, it's very difficult to control the mind. Mind is just bada 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 like a monkey jump. So we engage in gross activities, somehow engaging in activities for Krishna's pleasure. In Ashtanga Yoga, in the beginning, they do so much asana. The 6th chapter means Ashtanga Yoga chapter. So many asanas, all these things they do. But later, the cessation of all material activities, and they go to Samadhi on Krishna. Similarly, in the stage of life, where Rajoguna, Tamoguna is there, very important to keep working hard for Krishna's service physically. But later, you can keep meditating on Krishna's lotus feet. Paramhamsa means is absorbed, Samadhi on Krishna's lotus feet. So here, some very important elements we study today. Just let me recap what are the points which we had to cover. Yes. So why, my Lord, you have come? So Prabhupada says in the purport, the previous shlokas, it talks about some transcendental nature of the Lord. But this shloka talks about the transcendental mission of the Lord. The Lord has some mission in this world. And we have been hearing, when God wants to do something, He is not dependent on anything. But when we want to do something, we are dependent on God to accomplish that. Suppose that Krishna wants to do something, He doesn't need anybody's help. He can do it all alone. But when we want something, we need Krishna's help. Just imagine what is our condition. Without Krishna's help, we can't do anything. And when Krishna wants to do something, it doesn't. So we want knowledge. Suppose you want to walk, you need legs, you need land, you need air, so many things. But actually, the most important thing we see in what Prabhupada wanted to give to this world was transcendental knowledge. Many people, their idea of spirituality is not this. Their idea of spirituality is open some hospitals, give some free food, open old age homes. That is their idea of spirituality. Society has no scent, or there is something called spiritual, which can totally satisfy a person. Ata Shikasha Namadi, no, not this shloka. Savai Pumsa Paradharma, Yata Bhakti Adhokshaje, Ahaituki Apratihata, Yayatma Suprasidati. There is just no idea in the society. In the name of transcendence, people open places of worship, but all they do is some social welfare activity. They may do sometimes better than that. We see some archana happening. But there is no plan to distribute transcendent knowledge because it doesn't exist. See, if you want to give, you should have, no? We have been every day talk about that. So-called schools and colleges, they don't teach transcendental knowledge. They only teach you how to bend an iron for a living. हमको तो आध्यात्मिक ज्ञान कहीं भी नहीं दिखता, कहीं भी वितरण नहीं हो रहा. आपको सोचिए, स्कूल कॉलेज कर रहे नहीं, वो तो बहुत ही ज्ञान दे रहे हैं, लोहा कैसे टेढ़ा करना, तो ऐसे ही. और पूजा के स्थल हैं, जनरली उधर पूजा हो जाए तो छोड़ो, उधर कुछ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज हो रहा होता है. भूखे को खाना खिला दिया, कपड़ा पहना दिया, बुढ़े को एक ओल्ड एज होम बना दिया, ऑर्फनेज बना दिया, बस वही है बस. और अगर पूजा है भी तो ज्ञान नहीं, न देते हैं न लेते हैं. And then if that makes it distinct, the Lord Chaitanya's mission is full of transcendental knowledge. When Prabhupada went to America, he took with him transcendental knowledge.
in the form of his books, and that is called book Bhagavata and person Bhagavatam, person who is actually showing what he is teaching. बोलना तो बहुत आसान है बैठ के कोई भी कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना मुश्किल होता है. प्रॉपर जी दोनों दे रहे थे. He was giving an example that is called person Bhagavata, at the same time book Bhagavata. दोनों भागवत साथ गए. And when the world, the spirit, see, to receive anything transcendental, you have to be submissive. Even to receive material knowledge, you have to be submissive. Forget spiritual knowledge. Tadavidhi, if you want to receive spiritual knowledge, tadavidhi pranipatena. First you have to become submissive. Pranipat means submissive. Pariprashnena. You should have inquiry. Therefore, the most important thing in the different elements, अभी एक दिन रात को डिस्कस किए थे ना, संडे को डिस्कस किए थे हम लोग, different elements to enhance bhakti. The final one was Tattva Darshan, to understand the absolute truth. Intense urge to understand the absolute truth. Therefore, we are getting together. किस चीज के लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं? Proper says a temple can easily become what is known as joint mess. Joint mess समझ आती है? There are many PGs होते हैं ना, वहाँ 10-15 लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग को थोड़ा पैसा डालते हैं, कोई एक कुक को हायर करते हैं. हम लोग यही कर रहे थे जब हम इन्फोसिस में काम करते थे. और एक जॉइंट मेस, इकट्ठा कुछ खाना बनता है, सब बैठ के खा जाते हैं, सो जाते हैं. We have come to actually to receive transcendental knowledge. ISKCON is nothing. This whole ISKCON is about the Gurukul. इधर एक गुरु है प्रभुपाद जी, और उनसे हम लोग स्पिरिचुअल ज्ञान लेने आए हैं. तो स्पिरिचुअल ज्ञान के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है थ्योरी, एक होता है रियलाइजेशन. दोनों चाहिए. थ्योरी भी चाहिए, समझना भी चाहिए कंसेप्ट क्या है, लेकिन उसका दर्शन करना भी चाहिए. So for that we have come. And same way Kapila Muni came to this world to give spiritual knowledge. He didn't come to this world, चलो भूखे को खाना खिलाना है, बुड्ढे को, ओल्ड को, ये नहीं करने आए थे. Kapila Muni has come for something very special, to give to the world transcendental knowledge. So our urge for transcendental knowledge should keep increasing. जीवस्य तत्व जिज्ञासा अचु एव कर्मति ही पराभवस्थावधबोध जातम यावन जिज्ञासा आत्म तत्व. पूरा जन्म ही अगर व्यर्थ है, अगर हमको अध्यात्म के प्रश्न मन में नहीं, बहुत गहरे प्रश्न होने चाहिए, हमेशा मन ऐसा रहना. क्यों भाई मैं भगवान की सेवा क्यों छोड़ दिया, पागल हूं क्या, ये प्रश्न रहना चाहिए. कैसे भगवान, एक दिन भगवान को हम मिल पाए, प्रश्न होना चाहिए. जैसे परीक्षित महाराज के सामने शुक मुनि आए, तो परीक्षित महाराज के बहुत प्रश्न थे, फायदा क्या नहीं. तो जैसे लोगों को होता है एक बड़े संत का दर्शन हो जाए, इसलिए थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए इंद्रिय भोग के लिए. मेनी पीपल आर वेरी ईगर, चलो भाई मायापुर यात्रा है, मायापुर चलेंगे, क्या करना है, थोड़ा आशीर्वाद ले लें, धाम है, इंद्रिय भोग मजे से करेंगे उसके बाद, इसके लिए थोड़ी जाते हैं. So can I get, if you go to a holy place and you do not sit and inquire to a holy man there, that visit is a waste. That visit even an animal can do. तीर्थ यात्रा में निकले, कुछ कुंड में नहा लिया, भगवान का दर्शन हो गया और आ गए, कुछ प्रसाद खाया. जनरली तीर्थ लोगों का ऐसा ही होता है ना. माता जी हिंदी समझ आता है ना? तीर्थ ऐसा ही होता है ना ज्यादातर लोगों का. लेकिन अगर उधर जाके आपने अब संतों को सुना नहीं तो तीर्थ व्यर्थ हो गया. बिकॉज कहीं भी जाते हैं, अध्यात्म ज्ञान को रिसीव करना ही हमारा लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं हमारा. हाउ टू रिसीव स्पिरिचुअल नॉलेज, हाउ टू रिसीव स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्म. Therefore Krishna's grace,
whenever we organize, थोड़ा बुद्धि है, we organize one session in the evening, है ना? लेकिन उसमें दिखते नहीं लोग. मायापुर में तो क्या है कि जाने की दूसरी जगह नहीं है. वृंदावन में तो मिले ही नहीं. जैसे ही 3 बजे गुल, अरे प्रभु जी तो वो प्रेम मंदिर नहीं ले गए, अरे प्रभु जी तो ताजमहल भी नहीं ले गए. उधर भी जाना है, उधर भी जाना है, उधर भी जाना है, उधर भी जाना है, उधर भी माथा टेकना, उधर भी माथा टेकना है. Next visit we're going to make from Mayapur and all, we'll focus and stay in ISKCON temple. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सुनना. अगर कहीं गए भी तो सुनने के लिए. हाँ, अच्छा कीर्तन होना और कथा सुनना. ये नहीं इधर गए उधर माथा टेका, उधर माथा टेका. सो ये जीवन का लक्ष्य, रिसीव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, इज somehow lost. Now, all the incarnations of the Lord do various activities, but what is very important, you see, generally लोगों को people know about the leelas in India. भाई ऐसा कृष्ण जी आए थे, ये किया, वो किया. But because they don't hear what Krishna spoke, their idea about Krishna is not very clear. जैसे आप देखिए, एबे जाज घुषु त्रिभुवाना, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया प्रभुपाद जी को जाने. चाहते हैं ना? बड़ा बड़ा होर्डिंग बना सकते हैं प्रभुपाद का फोटो का, इट्स गुड. पर ज्यादा अच्छा रहेगा लोग प्रभुपाद के एटलीस्ट एक बुक पढ़ लें. When Prabhupada came to India, बोलते थे एक क्लर्क भी, छोटा सा जॉब करने वाला आदमी, एक छोटा किताब जरूर खरीद सकता है और उसको पढ़ सकता है. बिकॉज मूल लक्ष्य गुरु का होता है आध्यात्मिक ज्ञान समाज में देना, है ना? तो अगर कोई प्रभुपाद का एक ही किताब पढ़ेगा, एक्चुअली उसका प्रभुपाद का महिमा उसको दिख जाएगा. वाह क्या भक्त है ना? सुन के ही तो पता चलता है. गुरु को कैसे पहचानते हैं? चेहरा देख के, उसकी नीली हरी आंखें देख के नहीं. गुरु को किस चीज पर? उसके बाल देख के, उसका साइज देख के, स्किन का कलर देख के नहीं. गुरु को कैसे पहचानते हैं? सुन के. जिज्ञासु श्रेय तस्मात् गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम. गुरु के पास तभी जाना चाहिए जब आध्यात्मिक ज्ञान जानने की इच्छा है. फैशन नहीं तो मेरा इनिशिएशन नहीं हुआ, अरे फैशन बना रखा है क्या? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जब हृदय में आध्यात्मिक दर्शन की जिज्ञासा है, आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा है. प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक प्रश्न नहीं हो गुरु के पास और सबमिसिव ईयर नहीं हो, गुरु के पास क्या करोगे? जाके बैठ जाओगे. हाँ बहुत अच्छा है. बहुत लोग ऐसा ही करो, बहुत अच्छा है, बहुत कृपालु. अरे उनको जाके सुनो, सुनने के लिए जाने का ना. और कुछ प्रश्न होने का, मैं कैसे जप करूं, जप करता हूं मन ही नहीं लगता, इस जन्म में संभव होगा क्या भगवत दर्शन? ऐसे प्रश्न होने चाहिए ना. नहीं प्रश्न नहीं है, कुछ सुनने की भी इच्छा नहीं है, खाली देख लिया, हाँ बहुत बड़ा संत, अच्छा लगा देख. तस्मात् गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम. गुरु का क्या लक्षण है? शब्दे परे च निष्णातम. वो जो आध्यात्मिक शब्द हैं उस पर उनका मन स्थित है. एक एक अध्यात्म के शब्द को स्वीकार कर लिया, हृदय से अंदर से स्वीकार कर लिया. ब्रह्मणि उपशमाशय, इसलिए वो भौतिक प्लेटफॉर्म में नहीं है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में. कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है. सो Kapila Muni came to this world to give transcendent knowledge, and he has given we read all the thing, and that is the greatest contribution anybody can make in this world. बहुत लोग बहुत तरह से to make various kind of contribution. See, Krishna also came, he gave Bhagavad Gita, transcendental knowledge. जो भौतिक लोग हैं उसको समझ नहीं पाते. हाँ, जैसे दिस इज कॉमन सेंस. नो, कोई एक आदमी आता है भूखा है, आप एक दिन उसको खाना खिला दिए, ठीक है भाई, आपने उसको मदद किया, अच्छा काम किया. बट हर दिन खिलाओगे क्या? नहीं. तो बोलते हैं
टू गिव नॉलेज इज बेटर देन टू गिव फूड, ये तो सोसाइटी में भी बोला जाता है ना, वो खुद कमाएगा। बट लेकिन खुद कमाएगा, लेकिन बुरी आदत तो वैसी की वैसी पड़े रहेंगी ना। जैसे बैंगलोर में लेबर का जो पेमेंट है डबल है, भारत में 300-400 से 1000 है, लेबर चार्ज ज्यादा है, इसलिए तो लेबर आते हैं इधर बोलते हैं इंडिया का दुबई है, मतलब डबल कमाते हैं। लेकिन मेरे को जो इनके ठेकेदार बता रहे थे, कुछ बदलता नहीं उनका, सेविंग नहीं होती, वो जो दारू की बॉटल है उसकी क्वालिटी बदल जाती है बस वो लोकल पीते थे, अभी फॉरेन ब्रांड पीने लग जाते, बस सारा पानी बहा देते हैं, कोई वैल्यू नहीं। तो खाली भौतिक ज्ञान देना भी कंप्लीट नहीं है, अगर आप उसको जीवन का दर्शन नहीं देंगे तो क्या फायदा हो। तो वो है आध्यात्मिक ज्ञान, और इसके वंचित समाज जी रहा है, पूरा समाज आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जी रहा है, ऐसा मूर्ख समाज। इसलिए आचार्य लोग क्या देखते हैं, कलयुग के लिए क्या बोला है, प्राण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाधिका। कलयुग की पहचान क्या है, इधर स्पिरिचुअल नॉलेज कम है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी जो डिवीजन था सोसाइटी में, इट इज बेस्ड ऑन हाउ मच स्पिरिचुअल नॉलेज इज अवेलेबल। ब्राह्मण पूरा है, दर्शन भी है, ज्ञान विज्ञान, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। क्षत्रिय थोड़ा कम है, ब्राह्मण 100%, 75%, वैश्य कम, फिर 50%, शूद्र 25%, कुछ होता है। प्रभुपाद जी मजाक कर रहे थे कि अब ये बहुत सच है, आप एक बहुत ही गरीब जगह पे चले जाइए, वहां अनएजुकेटेड लोग भी हैं, कुछ भी हो जाए भगवान की ऐसी इच्छा है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कि थोड़ा कृष्ण का ज्ञान है ना, कुछ भजन भी करते हैं। कहीं पे भी भारत भूमि को इसलिए स्पेशल माना गया है, यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, करेक्ट, दैट इज द बेनिफिट। इसीलिए इफ यू हैव सम बेसिक नॉलेज, इसीलिए दे कुड रिसीव कृष्णा, कृष्णा इधर ही आए। अरे बाबा, आपके पास भौतिक नॉलेज है, आप नोबल लॉरेट हैं, आप क्या बंदर में जाएंगे क्या मार्केट में, कोई फायदा नहीं ना, आपका नॉलेज वो रिसीव नहीं कर सकते। बट यू विल गो टू प्लेस दे कैन रिसीव। सिमिलरली कृष्णा इज नॉट बाउंड, कृष्णा कैन कम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, because primarily Krishna comes to give transcendental knowledge. He goes to a place where people can receive it, है ना। जैसे आप नोबल लॉरेट हैं, आप कॉलेज को जाते हैं, कुछ समझ सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं। So similarly in India, we are able to understand. The Prabhupada said, outside India, I don't find transcendental knowledge anywhere. Mostly नैतिकवाद, भौतिकवाद, मायावाद, यही है, अध्यात्म नहीं है कहीं पे। जो उनके सबसे बड़े फिलोसफर्स भी रहे हैं, एरिस्टोटल, सॉक्रेटिस, ट्रांसेंडेंट नॉलेज नहीं है। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ मोरालिटी, वेरी गुड स्टेटमेंट। In fact, if you want to collect good morality, you can collect from Plato, Aristotle, Socrates. I have seen बहुत बड़े बड़े कॉलेज कैंपस में ये सब लगा देते हैं। When I go to Manipal, बड़ very impressive statement, strong statement. But they don't value, in India itself there is no value of transcendent knowledge. There is just no value, है ना, सच है ना, कोई value नहीं है। इसलिए it is kind of a fashion or kind of something people talk about, but people are not spending time to receive transcendent knowledge, to hear transcendent knowledge. They don't know. Vidya vidadati vinayam. Real knowledge actually makes us gentlemen. Real knowledge gives us devotion to Krishna. Real knowledge makes us totally happy. Real knowledge frees us from all the sinful activities and gives us the joy of spiritual happiness, takes us to the spiritual world. अरे भाई, कोई भी चीज चाहिए ना, कुछ फायदा चाहिए, है ना। हम कोई चीज, जैसे कॉलेज जाते हैं बच्चे, वहां पढ़ाई शुरू हो जाती है, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सालों में पता चलता है ये तो बोर है, सब बहुत ही घुटन होती है सुन सुन के। लेकिन when we heard about Bhagavad Gita, Krishna, so much joy, because transcendental knowledge is full of happiness. It's living, it's alive.
Transcendental knowledge is not dead, it is alive, it is non-different from Krishna. आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो जीवित है, उसमें शक्ति है, वो कृष्ण से नॉन डिफरेंट है. लेकिन जो भौतिक ज्ञान है, दैट इज नथिंग, इट इज डेड. हरे कृष्णा. थैंक यू एवरीबॉडी. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. कृष्ण प्रभु जी. कृष्ण प्रभु जी दंडवत कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. Thank you, Prabhuji.